Hi Sika, how are you? Yeah, I am fine. How are you? I'm also fine. So can you give brief introduction about yourself? Yeah, hello everyone. Myself Isika Bag, and currently I am doing my fourth year from Meghnad Institute of Technology, and my specialization is electrical engineering. And recently I got job. I am pleased. So that's nice. Finally you are employed. Yeah, Congratulations. thank you, So thank you. how you came to know about this opportunity, like whether it is Uh, on campus I or off campus? I got job in on campus. This DTDC came through my on campus. Okay, so can you give a introduction like all round in brief? Yeah, there was 5 round. First round was general selection. After the database they selected or we have to submit, and after that the whole process held in offline. Like we have to go in Technomen Salt Lake group, and there held the total exam. First round was a basic psychometric round that in a Google form. Like there was some general question like why you want to join DTDC, what's are your strength and weaknesses, what's your hobby, your name, your percentage, and all. After that, they held an group discussion round. In group discussion round, they divided the all the candidates in 10 to 12 group as far I remember, and in my group the topic of the group discussion was hard work versus smart work. Okay. And then this is second. Then actually I didn't prepare for the group discussion round because according to me, whatever came in your mind in that moment, the main funda for the group discussion round is you have to speak. You have to speak politely, and there was the most important thing was there have to be an introduction for yourself, because there was a point for the introduction and also for the conclusion, and you have to speak anything like it's for against or is it's for anything you have to speak. If you shut your mouth, then it will be a negative for that moment, negative point for that moment. So First round psychometric test, second round group discussion, third round. yeah, third round after it was an elimination round. Jury was an elimination round. After that there was another psychometric test, and before that they held an aptitude test. Aptitude test was moderate, like there was quants question and reasoning questions also, and verbal very few. Reasoning question like basic patterns and graph chart जो होता है ना, ग्राफ वगैरह से क्वेश्चंस एंड रीजनिंग लाइक विजुअल रीजनिंग जो होता है पैटर्न दिया Pattern पैटर्न recognition. हाँ हाँ पैटर्न होता है लाइक व्हाट विल बी द mirror picture or Okay, like that. okay. Then blood relation also, कोडेड डिकोडेड जो होता है ना लॉजिकल रीजनिंग में वो भी था. तो aptitude was moderate. Aptitude was also an elimination round. Like GD aptitude round and the last psychometric test, both 3 rounds are elimination round. And after the aptitude test, I cleared that. And after that, there was also a psychometric test. Psychometric test was it was my first psychometric test because जो भी मैंने दिया था कंपनी का एग्जाम प्रीवियसली वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था. So it was totally new for me, but I practiced it on the online website. Okay. So, in psychometric test, there was questions like you are a team player, and there was 4 option like more like me, somewhat like me, or neutral. And you have to Choose bit like choose. yeah, you have to choose all those things. After that, the interview held. Okay, so overall there was 5 round, and if we like uh, choose like which round was very difficult for you. Actually, for me, a psychometric test because you don't know what company requirement or what company will like, what answer company will like. There was nothing like correct. Like Uh, you
you have some personality, but company requirements are something else. Yeah. So if you like more, I think the one trick I want to tell you that don't be so rigid. Like, no, I am like Yeah. this. I am so much stubborn. I don't do anything like that. So it will negative point for them. Okay. So basically, like you don't know actually what company want from you. Suppose you choose something and company wants something else from you. So there is no correct answer. Like, Yeah, there is no correct answer, but some there was some question we have to give the answer for companies for. okay, Like, we don't like, no, I don't want to do that. If you want to get a job, obviously, if you want to get a job, then you have to do it. So okay. it was a little bit tricky round. So suppose if like 100 student gave this complete 5 round, out of 100, what is the percentage of selection? Okay, after all four rounds, they selected 40 to 45 students for Out the of, interview. Out of the correct number, I didn't remember. Out of 60 to 70. okay, and complete like complete place offer. Complete, they hired 25 people, I guess. 25 people, whole techno group, from whole techno group. Okay, that's great. So you are one of them. Yeah, hopefully I am one of them. Congratulations once again. So Mhm. now next question is like resources. Like let me ask one question. Like when you started your journey, what roadmap you followed for to prepare for them? Like all the things, psychometric test, aptitude test, and how you prepared for interview, HR questions, all of them. In my company, actually, it's a logistic company, so they mainly focus for HR round. They have no like something like technical round, but if they want to ask you technical question, they will. So you have to prepare some basic questions based on your core or based on your CV, mainly what's in your CV. Like if you add Java or C++ in your CV, then you have to gone go through all those things to answer well in the interview. But in my company, they mainly focused HR questions. As far I remember, they asked me like my self introduction, uh, about my family, and why should they hire me. That's the question was. And one question was that like that it was a bit difficult for me for that moment, like how will handle the how will I handled all the process of their company. Like they are completely work differently from the IT or and the core company. Okay, So that was a little bit tough for me. at that uh, moment. Okay, at that moment, that is little bit difficult for you to answer. Like yeah. actually, okay, Yeah. But one thing I will say that if you're confident enough, it will be a plus point for the interview. okay. So, So, like, what are resources you followed to prepare for everything? what resources means for this particular my company or anything else? No, or anything else in general for this company also, or anything else other also. Okay, I started my preparation at the end of the second year. So, at firstly, I like to uh, say that every student must give attention to the aptitude. Everyone thinks that coding is very important and all. We have to be a good coder, but no. First basic round was aptitude. Even I was one of them. Like, okay, aptitude छोड़ देते हैं, coding कर लेते हैं पहले. But aptitude clear करना बहुत जरूरी था. तो एप्टीट्यूड के लिए आई देयर वाज मेनी ऑनलाइन साइट लाइक इंडिया बिक्स, like fresh face prep Yes, something. prep. Yeah, face prep. The prep insta also is Yeah. very well. Prep insta is also good. There was, if you
search in the Google, there was various sites. Just gone through them, learn the tricks, and practice them well. Like you have to practice daily basis. Like I do like 20 to 30 question every day. Not if every day नहीं होता तो like 5 days तो कर ही लेते week में. ओके, यस यस, 5 days एटलीस्ट, बिकॉज ये प्रैक्टिस का चीज है और डेली करने से वो क्या होगा, प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ता है. स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगा. या और स्पीड बहुत ही ज्यादा मैटर करता है इस टेस्ट में. लाइक आई फेल्ड इन सम टेस्ट इन first round of on campus because of the time limit. Like Okay. in TCS also there was very few time limit and the question also was very big, so it was very tough. ओके, तो हम लोग को एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर करना हो, जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कि हाँ इसको बाद में देख लेंगे. या एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और टाइम में करना है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, टाइम में करना है. देन एप्टीट्यूड के अंदर तो 3 सेक्शन आता है, लाइक क्वांट्स, लॉजिकल एंड ऑल्सो वर्बल. तो तीनों इक्वली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. एंड I guess another one is what's on your CV is more important. Like if you want, if you put Java, C++, or anything else like Python, you have to go through it before the interview very well. Like moderate level, in the moderate level. वो अच्छे से जानना बहुत जरूरी है because वो लोग CV से ही ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं. यस यस, तो जो तुम्हारे सीवी में एटलीस्ट उसको फेक नहीं लिखो, यानी कि झूठ हाँ, नहीं लिखो. कोई कोई लोग होते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, फुल स्टैक डेवलपर, ये सारा सारा टेक्नोलॉजी, और फिर वो उनसे पूछते हैं तो वो नहीं पता रहता. सीवी में उतना ही लिखो जितना आता है. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और जो ब्रांच से हम लोग बिलोंग करते हैं, लाइक आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और यू आर फ्रॉम IT, वी हैव टू compete good in our basics. We have to good in our basics. Like we have to prepare for the basics because कि इंटरव्यू में ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं. बहुत लोग मिस कर जाते हैं और वो बेसिक्स ही हम लोग मिस कर जाते हैं. हम लोग बहुत हाई फाई चीज पढ़कर चले जाता है, बट वो बेसिक्स ही हम लोग वहाँ जाके आंसर नहीं कर पाते. तो एटलीस्ट बेसिक रहेगा तो फिर हम लोग आराम से हाई लेवल भी आराम से कर लेंगे. लेकिन बहुत लोग का क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चंस ही नहीं पता रहता है और वो सारे हार्ड क्वेश्चन पहले देखना चाहते हैं. हाँ, तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड आफ्टर दैट जो HR राउंड होता है वो उसके लिए अकॉर्डिंग टू मी जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, लाइक माय like if your tomorrow exam is you are interviewing in Infosys or Wipro something else, there was some a specific job role and they are giving you a job description in the JD. तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज कंपनीज के रिक्वायरमेंट क्या है वो जानना बहुत जरूरी है HR राउंड के लिए. तो ये ट्रिक मैं फॉलो करती थी HR राउंड के लिए आफ्टर मेनी रिजेक्शन. पहले वो कुछ सम बेसिक क्वेश्चन पढ़ कर चले जाते हैं बट नहीं होता. बट आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट नो, दे नीड समथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम मी, सो आई हैव टू प्रिपेयर द JD वेल और आई हैव टू लर्न व्हाट आर दे रिक्वायर फ्रॉम मी. सो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है. So that is the new thing also to me, like job description अच्छे से पढ़ो ताकि जो वो एग्जैक्टली चाहती है कंपनी वो पता चल जाए कि एग्जैक्टली कौन सा रोल है और स्पेसिफिकली तुमसे क्या चाहती है. हाँ, like there was some few skill like they want someone who committed to learning or good in team leadership or a new adapting in new environment. वो सब चीज ना जॉब डिस्क्रिप्शन में अच्छा से लिखा होता है. तो that is very important. तो अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो रिजेक्शन होता है. तो मेनली आपका भी रिजेक्शन बहुत सारा हुआ होगा, तो हाउ यू हैंडल दैट रिजेक्शंस. और रिजेक्शंस हुआ है और इस टाइम क्या हो रहा है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है. तो लॉट्स ऑफ पीपल का क्या हो रहा है कि एक रिजेक्ट हो रहे हैं और वो डर जा रहे हैं कि मेरा जॉब लगेगा नहीं लगेगा. तो क्या लगता है फिर इसको कैसे हम लोग हैंडल करें और कैसे प्रिपेयर्ड रहे कि नहीं अगला इंटरव्यू उनको देना है. Okay. In my story, I have many rejection in the beginning of placements. But one thing I want to tell you that if you well enough or if you prepared enough, you will get the job.
it will take time, but you have to prepare well. Like नहीं हो रहा है छोड़ देते हैं, नहीं बैठेंगे नेक्स्ट कंपनी में, ऐसे माइंडसेट नहीं करना है. लाइक ठीक है ये नहीं हुआ छोड़ देते हैं, सामने वाले जो है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं अच्छे से. लाइक यू डोंट नो what will click, what will click, and learn from your rejection. That the most important thing. Like किस चीज के लिए मेरे पिछले वाले कंपनी में नहीं हुआ, इट वाज टेक्निकल और इट वाज एनी एप्टीट्यूड राउंड और इट वाज एनी एचआर क्वेश्चंस. Focus on that and keep grinding on that particular thing. I think that was most important. और like ठीक है पहले नहीं हुआ तो अगली सेकंड वाली में हो जाएगी, ऐसे कुछ. लाइक हाँ सैड लगता है, लाइक ओके नहीं हुआ, सबका हो गया, मेरा नहीं हो रहा, बट ठीक है हो जाता है इफ यू वर्क हार्ड इनफ. हार्ड वर्क बहुत जरूरी है. लाइक ओके आई एम अ गुड स्टूडेंट, बट वी ऑल आर गुड स्टूडेंट, बट हार्ड वर्क से इफ यू डू इट with hard work, then it will give you result. यस बेसिकली होता है कि आसपास हम लोग अपने दोस्तों को देखते हैं, उनका जॉब लग रहा है तो अपने मेरा नहीं लग रहा, इनसिक्योरिटी आ जाता है कि नहीं, इनसिक्योर हो जाते हैं कि उनका लग गया, वो मेरे से कम पढ़ा था फिर भी उनका हो गया, ऐसा होता है. तो फिर उस टाइम क्या करना है, अपने आप को और बोलना है कि नहीं पढ़ना है और अच्छे कंपनी में होगा, इसमें अच्छे कंपनी. या every word has a worth, I believe that. So yeah, लाइक डीमोटिवेट नहीं होना. लाइक ओके नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, अगले के लिए पढ़ते हैं, एंड इसमें भी नहीं हुआ देन कंपनी विल कम, कोई ना कोई भी हो जाएगा, बट नेवर स्टॉप ट्राइंग. दैट्स ऑल द थिंग. अपना बेस्ट देना है, गिव योर बेस्ट एंड देन give your best, then one thing I believe that give your best, then other thing depends on the luck. If you are lucky enough, then it will make the result. यस यस लक बहुत मैटर करता है. हाँ ऑन कैंपस ऑफ कैंपस हर जगह लक मैटर करता है. हाँ लक मैटर करता है. या लेकिन अगर अपना ही बेस्ट नहीं दिए तो हम लोग को पहले ही पता चल जाएगा कि हम लोग रिजेक्ट होने वाले हैं. हाँ अपना अच्छे से प्रिपेयर्ड इनफ होके जाओ और उसके बाद रिजेक्ट हो रहे हो तो फिर उसके बाद टेंशन नहीं है, क्योंकि हम अपना बेस्ट दिए, रिजेक्ट हो गए, कोई टेंशन नहीं. तो जॉब तो लग जाएगा आज नहीं तो कल, अगर अच्छे से पढ़ेंगे जॉब लगना. अभी सिचुएशन खराब है, लेकिन हाँ अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो लेटर ऑन लग ही जाएगा. रिसेशन के लिए बहुत सारे कंपनी वेरी फ्यू हायर कर. लाइक in previous year some companies hire like 20 to 30 people, and this year they will hire just 2 to 3 people. That will very difficult for us also, that when we faced all those things. Okay, so nice. One outro or any advice कुछ देना चाहो? Yeah, one thing that for our juniors, like who are preparing for upcoming placements, that prepare well, prepare for the aptitude and focus on the basics more. And coding round, if you practice the coding one daily basis, like easy to medium level में तो हो जाएगा. and job description पढ़ना बहुत ही जरूरी है, and work hard, that's all. there is no shortcut. हाँ अच्छा लाख हो तो मिल जाएगा, but नहीं हुआ then work hard. That's one thing I believe. Yes yes. तो हम लोग को बस अपना हार्ड वर्क करते रहना है और बाकी अपना ग्राइंडिंग करते रहना है. प्लेसमेंट को ऐसा नहीं सोचना है कि एक नहीं हुआ तो अगला नहीं होगा, तो अपना बेस्ट देते रहो, प्लेसमेंट हो जाएगा. फिर उसके बाद भी ग्राइंडिंग करते रहना है कंपनी में आने के बाद भी, तो वो कभी रुकना नहीं पड़ेगा तुमको, हमेशा मेहनत करते रहना होगा, आज नहीं तो कल. और एक और चीज भी याद रखना पड़ता है, लाइक यहाँ हो जाए तो नहीं छोड़ देते हैं, एक कंपनी में तो लग गए, नॉट लाइक दैट. लाइक ओके मुझे और बेटर के लिए भी ट्राई करना होगा. सो कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. थैंक यू वेरी मच इसिका, ये सब बताने के लिए अच्छे से पूरे डिटेल में. होप कि ये बहुत लोग को मदद करेगा पॉडकास्ट, जिनको भी ये डर लग रहा है कि मेरा नहीं होगा या फिर कुछ भी होगा उनसे, उनको देख के लगेगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ अब आराम से. हाँ मैं कर लिया तो और लोग भी कर लेगा. So that's a confident. कोई भी कर सकता है. प्लेसमेंट इतना हार्ड नहीं होता है. 6 महीना से 1 साल अगर दे दे अच्छा तो हाँ 6 महीने से 1 साल फोकस से हम कर लेते तो हो जाएंगे. Thank you very much Isika. Yeah, thank you. Welcome you. And it's also a new thing for me to give my experience to others. No, we will definitely do another
podcast, like we will say something else. Thank you very much, Aniki. Yeah, thank you.